Hello everyone, let's solve this question. This question comes in GATE 2014 EC in signal system. Okay, this is a type of this question is a type of discrete time signals. In this question, what we have to do? See, in x of n equals to n for a given interval 0 से लेकर 10 and 0 otherwise. Okay. अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि yn is the convolution of xn with itself. What do you, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, yn क्या है, yn is the convolution of x of n with itself. Okay, and the value of y of 4. What we have to find? We have to find the value of output at 4. Okay, so let's begin. What we know from the standard convolution that y of n equals to minus infinity of infinity x of k shift to n minus k, and for this now see for what we have to find y of 4. Okay, so put n equals to 4 in this question, y equals to 4. Okay, minus infinity to infinity, its range of k. Okay, x of k, x of 4 minus k, and from now start expanding. Okay, but carefully see that this limit is minus infinity to infinity, but the given question has limit from 0 to 10. Okay, x of k, x of 4 minus k, expand it, x of 0, x of 4 plus x of 1, x of 4, 3 plus x of 2, x of 4 minus 2, 2 plus x of 1 minute, x of 3, x of 3, x of 4 minus 3, 1 plus x of 4, x of 0 plus x of 5, 1 minute, x of 5, x of minus 1. See, from now onward when you put goes to x of 10, then x of 4 minus 10 minus 6, this is negative, but in the question limit is from 0 to 10, otherwise value is 0. Okay, तो ये जितना भी नेगेटिव है सब तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जितना टर्म है सब तो 0 है ना, मतलब, और ये भी तो टर्म 0, x of 0 0 हो जाएगा, x of 0 0 हो गया, अब बचा क्या हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ और ये वाला बचेगा. तो हम लोग अलग से लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, x of 1, x of 3 प्लस x of 2, x of 2 प्लस x of 3, x of 1. x of 1 क्या है, x of n है ना, तो x of n है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, समझ रहे हो ना. x of n का वैल्यू देखो क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, n होगा, फॉर लिमिट n इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो लेने अदरवाइज क्या, और अदरवाइज 0, तो क्वेश्चन ही में दिया हुआ, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख लेते हैं ना, 3 into 1, 3 plus 4 plus 3, 6 plus 4 equals to 10. The answer is 10. Thank you.